Hello children, welcome to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with the new video, that is the second application of dimensional analysis. First application हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया है, उसके लिए आपको पहला वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा to learn the concept. Okay, so we are dealing with the dimensional consistency of the physical relation. Here we will see that the equation is dimensionally correct or not. So to learn this, checking the dimensional consistency, checking the dimensional correctness of the equation, we need to learn one concept, that is principle of homogeneity of dimension. What it says that if physical equation is dimensionally correct, if the dimensions of all the terms on both the sides of the equations are the same, मतलब हमारे पास यदि equation है, जैसे आपने पढ़ा है equations of motion पढ़ी है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. ये जो equations हैं इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे और पाएंगे कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आता है, तब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी. और ये किस पर बेस्ड है? दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड. दैट मीन्स लेंथ कैन बी एडेड विथ लेंथ ओनली, force can be added with force can be subtracted with force. पर ध्यान रखिए, length minus length will give you length, length plus length will give you length. आप भाई length को length के साथ जोड़ेंगे तो length ही मिलने वाला है ना. length को मान लीजिए 10 मीटर लेंथ है, उसमें से 5 मीटर लेंथ को माइनस कर दिया तो जो 5 मीटर लेंथ आया, जो 5 मीटर आया वो लेंथ ही आया ना. तो l minus l is again l, don't write 0. Okay, the common mistake done by the students. Yes. So let's begin with one question. I have written the question. Check the dimensional correctness of the following equation. Lambda is equal to h by mv, where lambda is de Broglie's wavelength. Wavelength is nothing but the distance. H is Planck's constant, m is mass and v is velocity. Yes. So we will be taking left hand side first. What is left hand side? We have lambda. What will be its dimension formula? Nothing but L. Say this is equation 1. Please write left hand side first and then right hand side and see that both are same. दोनों को एक साथ लेकर नहीं सॉल्व करना है, very wrong method. Okay. Right hand side. We will write h upon mv. What is its dimension formula? For h we have ml square t minus 1 and mass is m. This is lt minus 1. Yes, mass into velocity. See, m will cancel, l will cancel with this. This is also cancelled. So what is left? We are left with L. This is your second equation. So you can write here that from 1 and 2, left hand side equal to right hand side. Therefore, the equation is dimensionally correct. Yes, we have one more type of question in this. Let's see that question. This is the question. क्या कहता है? Find the dimensions of a upon b in the equation E is equal to b minus x square upon at, where E is energy, x is distance, t is time. हमको a और b पहले निकालना होगा using the principle of dimensional analysis, that is principle of homogeneity of dimensions, and we will be solving this. Okay, after getting the value of a and b, we will divide it. Okay, so let's see how we will solve. You see the numerator कितना आसान है, b minus x square, दो क्वांटिटी में सब्ट्रैक्शन है. It means दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है? ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड. मतलब यहां पर यदि हमने एक्स स्क्वायर को बी से माइनस किया है, मतलब बी भी एक्स स्क्वायर जैसा ही होना चाहिए. सो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. और ये कितना होता है? एल स्क्वायर. बी का डायमेंशन मिल गया, एल स्क्वायर. समझ आया? ये नहीं करना कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0. अब ए को निकालने के लिए हम ऐसा कंसेप्ट नहीं लगा सकते. यू सी फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी. यस,
b minus x square. What's the dimension? L square. Again I am saying don't write L square minus L square, that will give you 0, nothing else. हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है फिर. E ml square t minus 2 time. This is small t, so time t. क्या मिलेगा देखो तो जरा. m minus 1, here it will be minus 1, so it will go to t plus 1. Yes. Therefore, a upon b is equal to m minus 1 t1 upon L square, which will give you m minus 1 L minus 2 t1. This is your answer. कितना आसान है. Clear? So this finishes with the second application of dimensional analysis. Now we will see the third application. So to derive the relation between different physical quantities, we are taking directly the question. The only thing you need to remember is the dimensional formula of various physical quantities. बहुत अच्छा आसान सा application है. देखिए, suppose a question is given, the velocity of a sound wave v through a medium depends on density of the medium d and modulus of elasticity. Modulus and coefficient of elasticity, one and the same thing, E. Derive by method of dimensions the formula for V, that is sound wave. Take constant k is equal to 1. I will tell you at last what is the meaning of this, why it is given. तो आपको क्वेश्चन में जिस भी क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है वो किस पर डिपेंड करती है वो भी दिया हुआ है. हमको केवल डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, इतनी सी बात है जो आपको करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. यू सी V डिपेंड्स ऑन how many factors? We will be writing D and E. Say power is A, power is B. We are writing proportional. We don't know whether it is 1 by something inversely or directly. We will write directly D raised to power A, E raised to power B. यहाँ भी आप आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. E को आप पहले लिख दें, D को बाद में लिख दें, E का पावर A लिख दें, D का पावर B लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Yes? So let's see. If it is proportionality, then we will be writing k d to the power a e raised to power b. This is proportionality constant. This is what it is given. You can take k is equal to 1. Say this is equation number 1. Now writing dimensions on both the sides. Velocity is how much? m0 lt minus 1. Dimension constants का नहीं होता है. ये again one more drawback of dimensional analysis. Okay. डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, ml माइनस 3, ml माइनस 1 t माइनस 2. पावर इसका कितना है? a, इसका पावर है b. अब हमारा काम है कि हम इसको m, l और t को एक साथ अरेंज करें. कैसे? What is the power of m here? a. In this it is b. So we will be writing simple a plus b. Power of l here it is minus 3. Power a, so minus 3. A. Here it is minus b. Power of t is minus 2b. Now, दोनों तरफ जो m और l और t का पावर्स है उनको इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज बोथ आर द पावर्स ऑफ ml and t on both the sides. So this will give you a plus b is equal to how much? Power is 0. This is your first equation. Minus 3a minus b equal to how much? This is nothing but 1. This is your second equation. Minus 2b equal to how much? Minus 1. This is your third equation. You can see from third equation, from equation 3, how much? Minus 2b equal to minus 1 will give you b is equal to 1 by 2. Yes? Put this value in 1, therefore from 1, a plus half equal to 0, this will give you a is equal to minus half. Yes, मिल गया वैल्यू a और b का. Therefore from a, हम इसको a दे देते हैं. What we will get? v is equal to some constant k. d का पावर a है, देखिए कितना आया है? माइनस हाफ. e पावर इज हाफ, सो वी कैन राइट k, हाफ इज नथिंग बट
Under root we can write E half upon D half. So this will be, और K की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 1. तो हम क्या करें? K को 1 रख देंगे और this is E upon D. This is the expression for velocity of sound wave which is asked. Yes. Thank you for watching my video till the end. Don't forget to like, share and subscribe. और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि फैमिली फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब करें. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे दैट मोटिवेट्स मी एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी कमिंग विथ few more videos on the concepts of physics for you, and I'm sure you will be liking the physics after seeing the videos. Okay, so watch the videos. Thank you everyone for watching the video till the end.